बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरीडे साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए इंपॉर्टेंट है और एफपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी? दैट इज जीन। द प्लैनेट मरकरी कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड the sun is that is in 88 days. Meteorology is the study of that is the study of atmosphere. Which branch of physics deals with nuclei? That is nuclear physics. Which of the following is a mammal? That is both A and B. Whale and dolphin. An extremely small piece of silicon on which integrated circuits are fabricated are called that is called chip. आप में से जो लोग चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। द नेक्स्ट इज acid deposition causes lakes and forests to die. What hormones cause the clinical manifestation of Graves' disease? That is thyroid hormones. आपको इस चैनल पर पीपीएससी इंग्लिश लेक्चर और एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट इज सेलुलोसिस? दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। बाय विच प्रोसेस कॉपर इज रिफाइंड? दैट इज रोस्टिंग। एंड द नेक्स्ट इज Sagittarius A, the black hole at the center of the Milky Way galaxy, is at a distance of 25,640 light years. What kind of soil is treated with gypsum to make it suitable for cropping? That is alkaline soil. The outermost layer of skin is that is epidermis. When sound is reflected from floor, ceiling or a wall, it mixes with the original sound and changes its complexion. It is called as reverberation. What is the third most common gas found in the air we breathe? Argon. The second most abundant metal found in the earth's crust is that is silicon. Vitamins were discovered by Casimir Funk. The first metal to be used by man was copper. LPG consists of mainly methane, butane and propane. And the last is vacuum tubes have been replaced by transistors. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. Allah Hafiz.